Okay, good evening everyone. Hello, hello, hello. How are you? कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. यस, गुड इवनिंग राजेश. अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर एवरीवन. सब ज्वाइन करते हैं. तब तक एक छोटा सा Q&A कर लेता हूँ मैं आप लोगों से. सो आज का जो हमारा बेसिक वेबिनार है, द टुडेज वेबिनार इज ऑल अबाउट पावर क्वेरी. इट्स अबाउट ऑटोमेशन. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड पावर क्वेरी बिफोर? इससे पहले आपने पावर क्वेरी यूज किया है? Yeah, I am also good. Shayan, I am also really good. Yeah, sure. See, Sahaya, it will be in bilingual, as we have students from like multiple states and multiple places, so it will be in bilingual. So don't worry. Everything that I'm saying in Hindi, I will be translating that in English as well. Uh, Let me clear your queries regarding certificate. You will get the certificate at the end only. So अभी आपको पूरा कंटेंट वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे प्रॉपर समझो. सर्टिफिकेट आपको एट द एंड प्रोवाइड होगा बिकॉज दैट इज द ओनली प्रीरिक्विसाइट. Okay, you will be getting certificate at the end. That is the prerequisite. In order to get the certificate, first you have to attend this whole webinar. So how many of you have used power query before? How many of you have used power query before this कितने power query use किया है? No, you will get the certificate immediately after this session. After this session completes, there will be a quiz on our website. You have to attend that quiz. आपको वो quiz attend करना है. Quiz attend करने के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल मिल जाएगा राइट अवे. सो आपको आज या कल नहीं मिलेगा. कैन यू सेट ड्यूरेशन ऑफ दिस सेशन? इट विल बी अराउंड 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितना भी जा सकता है. डिपेंड करता है. अगर हमें सेशन प्रॉपर से आता है अपना, तो 1-1.5 घंटे का बिल्कुल हम करेंगे उसको पूरा. ओके, सो पावर क्वेरी. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट पावर क्वेरी इज? How many of you know what Power Query is? कितने लोगों ने पावर क्वेरी यूज की पहले, या फिर यू नो अबाउट पावर क्वेरी? No, Sahaya, we are not going to cover in here. We are going to cover the automation using Power Query. If we want that, we should have a VB code webinar also. We'll have it in the future, like up in the next week or something. But today we'll be learning about Power Query only. Use for data analytics, sir. Will I get the certificate? Yes, you will get the certificate, but at the end of the session. Vedika is asking, use for consolidation and cleaning the data. Yes, no idea about query. Can I get the recording? As due to my work timing, I won't be able to attend the full webinar. Yes, Om Prakash, the recording will be available on our YouTube channel. You can this particular recording on our YouTube channel. Yes, you can. About power transformation, you can complete these kind of tasks. And these two tasks are really important if you want to go into the data analytics field. If you want to go in any analytics field, or if you want to work with data, you need to learn these two things, especially data cleaning and data transformation. uh, Certificate screen is not clear, maybe due to the network. It is not clear. It is possible, maybe due to the network it is not clear. थोड़ा एक लाइक मेरे एंड से भी एक हो सकता है, आपके एंड से भी एक थोड़ा हो सकता है. तो उससे क्या होता है कि वेन एवर वी आर लाइक ऑन एनी स्ट्रीम, थोड़ा नेटवर्क के बेसिस पे वो आता है, तो धीरे धीरे वो अपने आप कर लेगा उसको. ग्रेट इनिशिएटिव ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच आमदनी. थैंक यू सो मच सर. स्क्रीन नॉट क्लियरली, वो थोड़ा एक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से होता है. सो मेनी मेंबर्स आर सेइंग दैट बट नॉट कैन गिव द सर्टिफिकेट. Let's see at the end of the session if we provide the certificate or not. If
there is no certificate, then it's truly upon you. You can give any kind of reviews, but you will get the certificate at the end only. Yeah, I have done that, Rohit. I have enabled the video quality option. It's on high. It's on like advanced. वो सबसे ज़्यादा high पर ही है अभी. Okay. So let's start. Can you see this data in front of yourself? हम दो तरीके के एनालिसिस करने वाले हैं. फर्स्ट इज ऑफ अ एड टेक, जहां पे आपके सामने कुछ डेटा क्लीनअप टास्क है. यू हैव सम डेटा क्लीनअप टास्क एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज टास्क यूजिंग पावर क्वेरी. ओके, सो आई विल बी रीडिंग द चैट्स इन बिटवीन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. ठीक है, इसे हम पहले स्टार्ट कर देते हैं. सो वी हैव दिस एडटेक डेटा इनर. हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है. वी हैव स्टूडेंट्स नेम, वी हैव स्टूडेंट्स ईमेल, वी हैव देयर कोर्स, like in which course they want to go for. We have their registration date, on which date they registered for the particular course, and we have the fees paid, like how many or how much fees they paid. Okay, so there are some cleanup tasks that we have. First, we have to check for blanks, like there are courses, there are registration data, and there are fees paid. You can see here that there are some blank spots in here. So we are going to handle those blank spots. Second, we have to check for duplicates. So in order to check for duplicates, we are going to look at a particular column. हम एक particular column पे देखने वाले हैं. Okay, so हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही देखने हैं जहां से हम रिमूव कर सकते हैं उन्हें. थर्ड, वी हैव टू क्रिएट अ स्टूडेंट आईडी. हमें एक आईडी भी क्रिएट करना है. वी हैव टू क्रिएट अ स्टूडेंट आईडी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स नेम. Fourth, we have to figure out the term start date. Now the term start dates condition I have already mentioned in here. If the registration date is on and before 14 December, the term start date will be 4 February 2023. And if the registration date is after 14 December 2022, the term start date will be 4 April 2023. As for the fee status, we have to calculate the fee status also. So if the student paid $500 or rupees, we can change it to any currency as you want. The student has fully paid the fees. If it's less than 500, then he paid partial. And if it's zero, then the student didn't paid any fees for the registration. Where can we get these data so that we can go along with you? See, Shivam, it will be a webinar, so I will be going up quite fast because there will be multiple queries also and I have to solve this data also. You can get this data after this session. Okay, you can get this data. आपको data मिल जाएगा. In our previous sessions also we have provided students with the data, so don't worry, you can get this data. I will be providing this data only. मैं आपको ये data provide कर दूंगा. आपको data मिल जाएगा इसका. Okay, so now we have to perform these cleanup tasks. Let's go. And one more thing, I'm going to show a really good automation that you can do with using Power Query. एक ऐसा automation जो I think आपने Excel में पहले कभी नहीं देखा होगा. And that too I will be doing without AI. So just think, if I can do that kind of automation without AI, just think what kind of automation I can do with AI. So let's start this. Okay, first we will make sure that we have this particular data in the table format, because if we want the automation to work, we need to have this data in the table format. So सबसे पहले हम data को table format में convert कर लेंगे. We will convert this data into a table format, and to make sure this is in a table format, we will just simply click on it. I have already converted this table into a table format. No, not using macros. We will be using Power BI only. Sorry, Power Query only. Table design, as the table design option comes, I can be sure that this particular data is in the table format, because only if your data is in table format, this table design option shows. Okay, so I'll minimize this first. मैं इसको minimize कर देता हूँ. I will create a new Excel file. Okay, I will create a new Excel file. Now we have this Excel file completely blank. I don't have any kind of data in here. I'll go on to the data tab. I want to bring the data in here now. So first I will close this file. मैं इस फाइल को प्रॉपर्ली क्लोज कर देता हूं. अभी हम इसको बाद में दोबारा ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके,
क्योंकि वी विल बी ओपनिंग दिस फाइल इन अदर सेक्शन ऑल्सो, मैं इसे दूसरे इसमें भी ओपन कर रहा हूँ, तो वी कांट यूज द सेम फाइल इन टू डिफरेंट एक्सेल डेटा बेसिस। ठीक है, मतलब हम एक साथ ऐसे इनको ओपन नहीं रख सकते। Will you provide certification? Yes, Kevin Lazarus, the certification will be provided at the end of the certification will be provided at the end only. So don't worry, you will get the certificate. Don't worry. You can trust me on that. I will be showing how to get the certificate only. I will show you how to attend the quiz. I will show you how you can opt for the quiz, and I can show you how you can get the certificate. I will even show you by completing the course also. मैं आपको पूरा वो complete करके ही बताऊंगा. Yes, the recording will be available on our YouTube channel. Let's go on to the data. Get the data. Let's say I want to get data from a file. I want to get data from the Excel workbook. So I selected the Excel workbook, and my Excel workbook is on the desktop only. Okay, here it is. I'll go on the desktop, and on the desktop, I will be selecting my file, which is transform data, and I will import it. As soon as I import it, I will be landing on the Power Query Navigator. Now, it will take some time. Power Query takes some time in processing, so don't worry. Okay, now we have this Power Query Navigator. This is called a Power Query Navigator. You can navigate your files, which files you select, which files you want to edit. So we have table, first of all, and we have sheet. Now, what's the difference between a table and a sheet? See, on the table, you will be having the data only. आपके पास वही data रहेगा जितना आपने table में specify किया है. You will be getting the data that you have in the table. But if you choose the sheet option, this sheet, you can see that there are two different icons for a table and for a sheet. If you choose the sheet, whole Excel sheet will be selected. What is the main function used in Excel? I can't get it. Like, what's the main function use you wanted to ask for? Okay, if you select the whole sheet will be selected. That means it will include the null values also. उसमें null values भी रहेंगे. It will consist of blanks also. It will consist some of error also. That is why we'll be taking a structured data source. A table is a form of structured data source. जो हमारा data पूरा structured रहता है. It is a structured data source in the form of rows and columns. So we'll be selecting table, and I will click on transform data. We will not directly load this data. First, we will transform this data. Okay, so now we have this data in front of ourselves. So what we have to do, we have to transform this data. Now let's minimize this. मैं इसको minimize कर देता हूँ जरा, है ना? और जो हमारा transform data file है उसे भी open कर लेता हूँ मैं. Excel can't do this because dialog box is open. Please close the dialog box to continue. Okay, that means is running in Power Query Editor. So that was I was saying कि आप directly ये यहाँ पर नहीं कर सकते. We can't do directly this. Okay. How can I start from beginning? So it is the beginning. I have only just imported the file in Power Query. So don't worry, we haven't started anything yet. Okay. Our first task was to check for blanks. What if we use BI tools for cleaning and manipulation data? In Power BI also, Power Query is used only. So if you want to use Power BI, you have to know what Power Query does, क्योंकि Power BI में भी आप Power Query का use करते हैं. And REST BI tools, where and when we get the certification at the end. After attending this whole session, you will be getting a quiz, and your question will be basis upon the session only. Complete the quiz, complete all the questions, and you will get the certificate at the end. I'll show you how to get that. So our first task is to check for blanks. Now there are three columns. अब मैं थोड़ा इसमें आपसे भी क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर करना है. We have three columns in here: course, registration date, and fees paid. So from which column do you think we will check for blanks? Because इन तीनों में हमारे पास blanks हैं, आप देख सकते हो. So which column do you think we should look for if we want to remove or handle the blanks? क्या लगता है आपको? This is basic EDA. ये basic EDA analysis है. Data solved only in Power BI. No, Power Query.
आप पावर क्वेरी से ही डेटा को क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद पावर बीआई के अंदर आप उसे लोड करते हैं. सेम हैपेंस इन एक्सेल ऑल्सो. ओके. कोर्स, महक सेट कोर्स, अक्षय सेट नेम कॉलम. नेम कॉलम से हम क्यों लेंगे? नेम कॉलम में तो हमारे पास नल है ही नहीं. कोर्स कोर्स कोर्स. शिवराज said replace value. No, we will not replace the value, Shivraj. We will handle those. Fees paid, fees, course, fees section. Okay. Course registration and fees. No, Sam, we can't do that from the 3 columns. हमें एक column choose करना पड़ेगा. Course as those who haven't selected the course. Yes, so those who have written the answer as course, you are correct. We will use the course column to handle our blanks. See, why fees paid? हम fees paid क्यों नहीं रहे? Why not fees paid? Because there are multiple students who have not paid any fees, and there are some students who have paid fees, but their registration date and courses are not there. So that is why we will not be selecting the fees. We will be selecting course. कोर्स में से हम रिमूव करेंगे. ओके. बिकॉज अगर आपका कोर्स सिलेक्टेड नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन डेट नहीं है. आपने बस अपना सीट बुक करने के लिए क्या दिया होगा? आपने एक नॉर्मल अमाउंट दिया होगा. व्हाट इज द मैक्स रो ऑफ काउंट दैट वी कैन अपलोड? इज देयर द लिमिट टू डेटा अपलोड? करंटली हमारा जो डेटा है इट इज ऑफ 130 रोज, और आप इसमें अच्छा खासा डेटा अपलोड कर सकते हो. नॉर्मली आई हैवंट लाइक एनालाइज लाइक व्हाट इज द लिमिट टू दैट. बट हाँ, you can upload a really big data set around 10,000 rows, 12,000. मतलब अच्छा खासा आप डेटा ले सकते हो. अच्छा खासा डेटा आप ले सकते हो. 1 लाख रोज तक का आप डेटा ले सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. बिल्कुल ले सकते हो. ओके. सो वी विल बी सिलेक्टिंग दिस. राइट क्लिक ऑन इट, एंड व्हाट वी कैन डू इन हियर, हमें ब्लैंक्स रिमूव करने. सो यहां से हम ब्लैंक रिमूव नहीं करेंगे. वी विल बी फिल्टरिंग द रो. ओके. एंड हाउ वी कैन फिल्टर द रो? गो ऑन दिस ऑप्शन, नल एंड ब्लैंक्स. सी, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, नल्स एंड ब्लैंक्स. तो मैं गया यहाँ पे कोर्स में, आई ओपन द फिल्टर एंड आई रिमूव्ड both these and I click on OK. So as you can see, we have removed the blanks. Yes, the data will be available to you at the end of the session. आपको send हो जाएगा. Don't worry. Okay. So we have removed the blanks. Now what we have to do? We have to check for duplicates. Okay. Now there's one more question. From which column do you think I will remove the duplicates? किस column में से हम duplicates remove कर सकते हैं? Which column we'll be using if we want to remove the duplicates? Now there could be only one answer. Email, name, email, names, name, email, hi, hello, email, email, name, course, email, email, name, again course. Okay. So those who have written email, your answer is correct. Let me tell you why. There are people who share the same name. Exactly. There can be people who have selected the same course also. Name और course same हो सकते हैं, तो course भी same हो सकते हैं. See, you can see that there are multiple people who have selected the analytics course. So it is a duplicate there, na? So we can't go with course and we can't go with registration date also. There could be people who have registered on the same date. फीस तो ले ही नहीं सकते. फीस आप देख ही रहे हो आपके सामने, बहुत से लोगों ने 500, 500, 100, 200 नल नहीं कर सकते. email is the correct answer because every person's email is unique and it's different. No, we will not be using courses. Courses can be same. We will be using email. Email सबका यूनिक होता है. Every person on this earth have a different email if it's only a difference of a single comma, a single number, a single dot. But still emails are, no, we can't use name also, Preeti. Name can also be the same. Two people share the same name also. बहुत से लोगों के सेम नेम भी हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं ले सकते. So that is why we will be removing duplicates from email section. Right click on this and we will remove duplicates. There is the option remove duplicates, and you can see that there are 93 rows now. Let me show you. Before there were 105 rows. You can see the column profiling. There were 105 rows.
And as I remove the duplicates from here, there are only 93 rows. Okay. Now the next step. Next step is we have to create language 0% understand 105. Thank you so much, Sam. Thank you so much. So now we have a task. In this task, is there any conditional formatting to check duplicate values? That is in Excel only. We can't use conditional formatting inside Power Query. We can't. Sir, you're doing in Excel or Power BI? I am doing in Excel. Can you translate in English? Okay. Sure, I can translate that in English. See, in Power Query, we'll be like giving the student ID now. We have to create a student ID column, and we have to create that student ID column on the basis of the name. Now we'll be using the whole first name and the first initial for the last name. हम फर्स्ट नेम पूरा लेने वाले हैं और जो लास्ट नेम का फर्स्ट इनिशियल है we'll be taking that. Okay. So we'll be creating a conditional column. Now here comes the main part. We have to add a column. So we'll be going on to the add column option. And in that add column option, I'll be selecting a conditional column, or let's say not conditional column, column from example, because I will be giving an example. So I selected this. Okay. Now I don't want to get from any of these. I only want to get the example from this particular column, from name column. Okay. I will rename this as student ID. Inside the student ID, as I said, we'll be taking the whole first name. We'll be taking the whole first name and we'll be taking first initial of the last name. Can you please tell what is mean by Power Query briefly? Rakshu, Power Query is basically a data cleaning and data transformation tool. So we want it to advance Excel with AI class also if possible. Yes, we will be having a workshop, guys. So a news for you, we'll be having a workshop from 26, this 26, not 26, 24, we'll be having a 6-day advanced Excel AI workshop. You can register for that and you will be getting a link on your chat box also. डोंट वरी, आपको उसका लिंक भी मिलेगा चैट बॉक्स का, आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हो. Yes. As data analyst, how can we be prepared as a fresher viewpoint? See, as a fresher, you need to learn three things. What is data cleaning, what is data transformation, and EDA, exploratory data analysis. These are the three things that you need to learn. ये आपको आने ही आने चाहिए अगर आप एनालिटिक्स या डेटा फील्ड में जाना चाहते हो. ये आपको आना ही चाहिए. डेटा को क्लीन कैसे करना है, डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एंड ईडीए, द वेरी क्रूशियल पार्ट, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. These are the three things if you are working as a fresher. Faizan, it will be paid, but don't worry, it will be only of a 99 rupees. Also, you will be getting recorded classes and live day sessions. I will be taking those live day sessions, don't worry. And you will be getting the recorded classes as well. You will be getting perks and benefits worth rupees 10,000 just in 99. So you have to register for that, and you can register on our website. हमारे वेबसाइट पे वो कोर्स अवेलेबल है, आप उस पे कर सकते हो. Now let's continue with our data cleaning, guys. We are at the point of data transformation. We have already done data cleaning. So we have Haley. Now I have used the whole first name. Now I will be using the only last name initial. As you can see, guys, the course is quiz link, जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. अब ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप पूरा सेशन देखोगे, क्योंकि इसी सेशन के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. Haley. And what's the tools that helps to clean data? There are multiple tools. You can use Excel, you can use Power Query, you can use Power BI. These are the tools that we mainly use to clean our data. You can use Power Pivot for data modeling also. So on 22, we'll having another session, another webinar on data modeling. Yes, don't worry. Now let's come on to this.
Now I want to go with student ID. I have selected the whole first name and now I want to add an initial. So I gave one example, hit enter. You can see that some examples are listed on the screen. Now I will give another example, Harvey R. I hit enter. You can see that by the first two examples, बाकी के जो names हैं अपने आप आने लगे हैं. Okay. I will explain it. Srushti, don't worry. I'll explain it. What EDA is, because in the next thing we are going to do EDA only. I will give one more example. Ramon R. As soon as I hit enter, we can see that all the names have transformed as per our example. And you can see a code has been written here. A formula has been written here and we didn't write this formula. We just simply performed our task and just formula has written it by itself. Code style dot none name in text combines delimiter split name. हमें ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी. We only have to select this, click on OK, and we have this new column with a student ID. So we'll be transferring it in here. Now for the next part, registration date. Now for registration date, we have some condition. We have two conditions. If the student has registered on or before 14 December, his term start date or her term start date will be 4 February 2023. अगर स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है 14 दिसंबर को या 14 दिसंबर से पहले, तो उसका टर्म स्टार्ट डेट होगा 4 फरवरी 2023 2023. और अगर स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है 14 दिसंबर के बाद, तो उसका टर्म स्टार्ट डेट होगा 14 April 2023. So we have this condition. Now for this condition, we have to know कि हम इस कंडीशन को प्रॉपरली कैसे रखेंगे. So we are going to add a conditional column. Okay. We are going to use a conditional column. Now let's change the column's name first. Let's name it as term start date. And which column do we want to use? I want to use the registration date. If student ID is duplicate, what I want to do? No, there can't be duplicates in the student ID, Sam, because we have removed the duplicates from email section already. So those were the original duplicates. See, if we look at this data technically, there are duplicates. There are duplicates in courses. There are duplicates in name also. Name may be ho sakte hain. There can be two people who share the same name. So that is why we used a column where duplicate shouldn't come. We used email. So with the email column, we have gotten rid of all the duplicates that we had only. So that is why there can't be or there won't be that much of a duplicate in student ID, because we have already removed those. Okay. So we have selected this term start date. I chose the column registration date. Now I have to choose the operator. Now I have one condition. If my registration date is before or equals to, now before or equals to, what should be the value? Before or equals to 14 December 2022. The output should be 4 February 2023. Now I have one more condition, but I will not give any clause. मैं एक और clause add नहीं करने वाला हूँ. I won't be adding any new clause. If this particular condition is fulfilled, then the output will be 4 February 2023. If this particular, let's say, condition is not fulfilled, else what I want to return, if this condition is not fulfilled, else return 4 April 2023. Okay. Click on OK. So we have this date, term start date. Always remember, whenever you are working with dates or you add a new date column, always change its data type to date, because date is a special type of format inside Excel. And with date only, you are able to do time intelligence analysis or date and time formulas. So you can see this is after, oh sorry, this is on 14 December. Our term start date is 4 February.
This is after 14 December, our term start date is 4 April. See, before 14 December, term start date is 4 February. After 14 December, term start date is 4 April. Okay. Now, as for our last transformation, we have fees paid. Okay. Now, for fees paid also, we will take conditional column. Now, we have three conditions in here. I will name it as fee status. Column name, fees paid. If the fees paid equals, now I have three condition. If the fees paid equals 500, then it's fully paid. If it's not equals to 500, if it's less than 500, it is partially paid. And if there is zero, there is not paid. If it's equal 500, then please return fully paid. Okay, let's do this very simple. I will add a clause. If fees paid equals 0, now we will not be using 0 in here. हम यहाँ पे 0 यूज नहीं करेंगे. We will not be using 0. The reason is there 0 written in any of there? If one person name is Sam Johnston and the other student ID is Sam J, another person name is Sam John, then their student ID is same, it's duplicate or not? No, because the student name is different. So don't worry, they will not be a duplicate. Technically, you can say those are duplicate. Those are the same values, but they are not duplicate. Because we have created the student ID on the basis of student name also. So there can be a possibility that student's first name and last name of the same initial. So don't worry, they will not be duplicate because their name will be different, their email will be different. So it will be a unique data. Don't worry. Fees paid equals 0. We will not be using 0. Why? Because there is null written here. There is null written here. There is not written 0 in any of those rows. So we will be using 0. Purpose of student ID, it's a process of transformation. There is like not that much of a purpose. This data set is for example only, so that you can know how you can use multiple tools inside Power Query to transform your data. You can give other examples also. So it's not that के यहाँ student ID का कोई purpose है. It's just that कि हमने एक student ID create कर दिया है, so that you can know how you can transform the data, how you can use column from examples. We'll be giving here null and not paid. Else. Now we have only one condition. Partially paid. Click on OK. And we have this here. Let's change the data type for these. This data type is in text. And all of these are also done. Okay. हमने कर लिया इसको पूरा. We have completed the transformation. We have completed the cleaning. Now let me tell you. This was our data initially. And you can see we have applied some of the data cleaning and transformation step, and we have converted our data into this table. So now I will be loading this data in Excel. How to start working in Power Query. I just told this is how you can work in Power Query. Okay, close and load, close and load. Yes, Krishna. Remove and merge columns. Yes, we can. We will be doing that also. Okay, Krishna. There's very logical thing in it. If you are going for accounting, will you be going for design and technology also? बहुत बेसिक लॉजिक क्वेश्चन है. देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा अपने को रियलिटी चेक पे भी रहना पड़ेगा ना. आप एक ही इंस्टीट्यूशन से दो कोर्सेज ले लोगे, और वो भी दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के, जिसमें एक अकाउंटिंग है, एक एनालिटिक्स है, एक लीडरशिप है. हो तो बहुत कुछ सकता है. मतलब कंडीशन होने को तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन उन कंडीशंस को रियल भी रखना होगा ना.
After close and load, we have to do nothing. Yes, different courses I am saying. आप खुद बताइए, आप एक ही इंस्टीट्यूशन से दो अलग अलग कोर्सेज लोगे, दो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के, जिनका कोई आता नाता ही नहीं है। हम्म। आप तो अपने स्पेशलाइजेशन का लोगे ना। तो कंडीशंस तो बहुत बन सकती हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशंस बहुत बन सकती हैं, देयर कुड बी many hypothetical conditions, but when you are working with data, you can't just work on hypothetical conditions. You have to go with reality checks also. As a job role of a data analyst, we will do only clean, transform, data exploratory data analysis, or there are many things to do. You will be doing data visualization also, Srishti. Now, let me tell you about this particular. हम मैं इसको पहले लोड टू कर देता हूँ, एक कनेक्शन और क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स क्रिएट अ कनेक्शन, ओनली क्रिएट अ कनेक्शन. ओके, and now let's load this file again as a table and click on OK. Okay, let's close this. इसे हटा देते हैं हम, इसकी हमें जरूरत नहीं है. Let's remove this. Let's delete the sheet. Delete. Come on, sheet 1. Go on data. Open Power Query Editor. Okay, let's see what's the error in here. Error check कर लेते हैं हम एक बार. Why we are getting this error. ठीक है, कंडीशनल कॉलम्स तो हमने ऐड कर दिए हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. नाउ द ओनली पार्ट वी हैव टू डू, वी ओनली हैव टू चेंज दिस टू टेक्स्ट. Data, so the data cannot be processed as it you okay, it is used in another open file. ठीक है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे. सी, दैट इज व्हाई यू कैनॉट ओपन टू फाइल्स एट द सेम टाइम. आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते क्योंकि शेयरिंग वायलेशन लग जाता है. We can't be using the same file like this because there will be a sharing violation. As I click on close and load, it's still not exporting my data. So first we have to close this. Okay, let's go into the Power Query Editor again. Go to error. There is source, navigation, change data type. Again, ये कर लिया हमने नेविगेट. ये आ गया हमारे पास पूरा. ठीक है, हमें कनेक्शन नहीं बनाना था. एंड यहाँ पे हमारा जो पूरा था वो चला गया हमारा प्रोसेस. तो हम इसे क्लोज कर देंगे. वी विल डिस्कार्ड द चेंजेस. आई डोंट वांट टू कीप द चेंजेस. सी, बाय यूजिंग पावर क्वेरी यू शुड बी अवेयर के आप दो टाइम पे एक साथ एक फाइल को ओपन नहीं रख सकते. यू विल गेट सम काइंड ऑफ दीज एरर. नाउ इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हमें चीजें दोबारा करनी हो सकती हैं. नो, वी डोंट. ठीक है, यहाँ पे हो गया है. नाउ आई विल क्लोज एंड लोड. होप इट विल क्लोज एंड लोड नाउ. नो. We didn't have to create a connection. Let's duplicate this. Okay, now we have this. ये आ गया हमारा टेबल पूरा. ये टेबल 1 हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं. लेट्स डिलीट दिस. इसका हमें नीड नहीं है. Yes, delete this. We don't need queries from this. But now we have our table 2. So now let me show you something. ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ. I will first close this. And we will go on to the transform data file. I will go again on my transform data file. जहां से ओरिजिनली जो मेरा डेटा सोर्स है. We will go on to our data source again.
And let me tell you about the automation. बहुत बेस्ट फीचर लगता है ये मुझे इसका. आई विल शो यू अनदर ऑटोमेशन, सो डोंट वरी. नाउ यू कैन सी ये जो हमारा पूरा डेटा था यहाँ तक तो हमने कर लिया. इज देयर एनी साइट फ्रॉम वेयर वी फाइंड रॉ डेटा और एक्सपेरिमेंटल परचेज? यू कैन गेट रॉ डेटा free of cost from Kaggle and Maven Analytics. Don't worry, at the end of the session I will show you those also. Yes, yes, yes. Just let me complete this automation and I will clear all of your doubts. I will show you things again. Don't worry. But just let me complete this automation. So, what if अब हमारे सोर्सेज में और नया डेटा ऐड होगा? व्हाट इफ नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम न्यू एंट्रीज इन आवर सोर्स? So let's add some entries to our sources. Okay, now we have Shushti Bhaviskar. Okay, let's give the email as Shushti underscore Bhaviskar 1234 at the rate qwer.org. Courses, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी. डेट इज डेट. चलो यहां से हम कोई भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है. लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट. लेट्स कॉपी दिस ओनली एंड पेस्ट इट हेयर. ओके, एंड फीस पेड फुल. ठीक है. वी हैव अनदर वन, Nazir Hussain. Okay, we have the Nazir underscore Hussain KRAN or 7894 at the rate asdf.com. Courses, analytics, and date is this one. Fees paid, fully paid. 3 separated column as day enrollment given for each year amount. New column where date is in DMM and YY format. Okay, Vedika, let me complete this and I will show you how to do that also. उसके लिए I have that sample data also जिसमें particular condition है. Don't worry, I'll show that. So, first of all, मैंने 2 नई एंट्रीज की है यहाँ पे. अब 2 नई एंट्रीज करने के बाद ना, फर्स्ट आई हैव टू सेव दिस फाइल, बिकॉज जब तक वो सोर्स में सेव नहीं होगा तब तक आपका वो पावर क्वेरी वाले फाइल में भी नहीं आएगा. सो लेट्स सेव दिस. आई विल बी प्रेसिंग Ctrl+S. सेव कर दिया हमने. क्लोज दिस. न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओपन करेंगे क्योंकि इसी में हमने पावर क्वेरी में अपना काम किया है. Other than what are the other things in data cleaning other than what you have performed? Data cleaning, you can handle null values, you can remove duplicate, check for blanks, you can fill in data, you can replace values, you can trim the data. Yes, you can trim the data also, you can separate the data, you can separate data by column delimiters, you can do many things. Now see here, data अभी लोड नहीं हुआ. It will take some time. Let it refresh. What happened? And as you can see, as I refresh the file in here, the new entries have already been transformed and I didn't do anything. मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने सिर्फ सोर्स में अपना एंट्री किया था. सिर्फ अपना एंट्री किया था. I have only done the entry in the data sources. I haven't done anything in this file. And as you can see, the two new entries that I have written have came here with the transformation, with student ID, with their term start date, and with their
fee status also. So this is the most powerful automation that have been done in Excel without AI. So just think what kind of automation you can do if we use AI inside Excel. Okay, so now let's clear the doubts. अब आप एक एक करके अपने doubts लिख सकते हैं. This was the automation that I wanted to show you guys. अब आप एक एक करके अपनी चीजें बता सकते हैं जो मैं repeat करवाना चाहते हैं. आप क्या क्या चीजें आपको repeat करवानी है. You can say that and I'll just repeat those right in the chat box now. It's free certification that you provide or any fees you have taken. No, Srushti, the certification will be free. Don't worry. आपको बस कोर्स में क्विज आपको अटेंड करना है और आपका मिल जाएगा आपको. नहीं नहीं, सर्टिफिकेशन फ्री है स्वप्निल. डोंट वरी. प्लीज रिपीट स्टूडेंट आईडी. ओके, कैन यू रिपीट ऑटोमेशन. ओके, पहले हम स्टूडेंट आईडी देख लेते हैं. ठीक है. यस यस यस, डोंट वरी. पहले हम स्टूडेंट आईडी देख लेते हैं. सो लेट्स गो ऑन द डेटा. Let's open the Power Query editor again. How we created student ID, student ID, student ID. Can we how to start working in Power Query? Yes, 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 Achman. Don't worry, don't worry. We have time. अपने पास time है अभी. Don't worry. Okay. So first we will see how we created student ID. See, for student ID हमारे पास पहले से एक example था कि we have to take the whole first name and only first letter of the last name. Yes. Wait, Nazir. One by one, one by one. So let's see the student ID first. स्टूडेंट आईडी में हमारे पास एक कंडीशन था कि हम स्टूडेंट आईडी कैसा बना सकते हैं. हमको पूरा फर्स्ट नेम लेना है और लास्ट नेम का सिर्फ पहला वर्ड लेना है. ये मेरा एग्जांपल है. सो आई विल सिलेक्ट दिस कॉलम, गो ऑन ऐड कॉलम ऑप्शन एट द टॉप and then go on column from examples because we will be given example what kind of value do we need. So let's open this from selection because we have selected the name column. Now as we do that हमारे पास ये section आ जाता है. So first we will rename this student ID. Okay, now write the first example. अब first name है हमारे पास Haley Antcliffe. So I will write Haley A, my first example. Now on basis of that first example, you can see many names have appeared on the screen. See, now by only one example you can't give student ID. आप सिर्फ एक एग्जांपल के बेसिस पे नहीं दे सकते क्योंकि आप देख सकते हो कि सबके नेम अलग अलग है. तो आपको ना 2-3 एग्जांपल देने पड़ेंगे. तो सेकंड एग्जांपल आई विल गिव Harvey R. And you can see again on basis of these two examples the name changed. Now let's give one more, Raymond R. And now you can see ये हमारा student ID अब आ गया है. See, click on OK and student name ID already exists. Please specify a different column name. So there we can't have two columns with the same name. So let's just change this. ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट आईडी. ठीक. Now let's go for the next doubt. Repeat the automation. How you created student ID, it's done. And how to start working in Power Query with normal data. Okay. See, Achman. Now in normal data आपके पास ना कुछ टास्क होंगे, जैसे कि उसमें आपको चीजें ट्रिम करना हो, है ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह होते हैं. मैं आपको थोड़े एक्सेल फाइल्स दिखाता हूँ. मेरे पास जो डेटा है मैं आपको उसके एग्जांपल से दिखाता हूँ. उसमें आप ये चीजें कर सकते हो. ठीक है. तो नॉर्मल डेटा में जैसे कि आपके पास डुप्लीकेट्स हैं तो आप डुप्लीकेट्स वगैरह देख सकते हो. पावर क्वेरी एक इतना अच्छा फीचर है कि आप उसके अंदर अपना कॉलम प्रोफाइलिंग भी देख सकते हैं. इफ आई टर्न ऑन द कॉलम प्रोफाइल, if I turn on the column quality, no, we don't install or we don't need any extension.
आपको बस डेटा इंपोर्ट करना है. इट इज प्री इंस्टॉल्ड इनसाइड एक्सेल. इट इज नॉट प्री इंस्टॉल्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल. You don't have to download anything, you don't have to enable anything, you just have to get the data from a different source, like from a text CSV file, from a different folder, from a PDF, from a SQL server. It is a part of Excel only, don't worry. Okay, so Power Query is such a powerful automation and data cleaning tool. Yes, the link will be, the link is on the top. मैं आपको अभी लिंक ओपन करके बताता हूं. मैं लिंक दोबारा पोस्ट कर दूंगा. सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक, डोंट वरी गीता, it's already inside Excel, it is a part of Excel. Okay, you are an amazing teacher, thank you so much, thank you so much. You have this data, now you can see what is the quality of your data. Now there is one more thing that you have to maintain. How many hours is taken? It's only been 52 minutes. Okay. So you have columns quality. You can see how many distinct values are there. You can see how many unique values are there. You can see how many, what kind of data you have. Do you have a valid data, or if there are any kind of errors, if there are any kind of empty values, you can see. You can see the value distribution, how much a particular value has came across in that column. It's in the form of a database team. See Nazir, डेटा क्लीनिंग के जो इंस्ट्रक्शन है, डेटा मॉडिफिकेशन के जो इंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू फाइंड दोज बाय यूजिंग ईडीए प्रोसेस, एंड एज वेल जो आपको चेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताए जाएंगे. कैन यू प्लीज टेल व्हाट्स एन एवरेज सैलरी ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एज अ फ्रेशर? एज अ फ्रेशर देखो, मैं आपको अगर बताना चाहूं, सो इट विल बी अराउंड 5 to 7 LPA. अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने अपना बैचलर्स मास्टर्स कंप्लीट किया है, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, एंड इफ यू आर एंटरिंग इन अ जॉब मार्केट, द हाईएस्ट सैलरी फॉर अ फ्रेशर दैट यू कैन गेट इज 5 to 7 LPA. And in that 5 to 7 LPA salary, you have to know SQL, you have to know Power BI, you have to know Excel, and you have to know Python, because through Python you can do advanced data cleaning. With SQL you can work with databases, and you can connect with RDBMS, and with Power BI you can go with data visualization, and Excel is used for basic pivot table reports and pivot table transformations. Okay, सो पावर क्वेरी टेल्स अस एवरीथिंग. आपके डेटा का क्वालिटी क्या है, आपका डेटा कितना एक्यूरेट होना चाहिए. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू नो. यस यस, टेक शॉर्ट्स, द लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी. नाउ एज फॉर द कोर्स, ठीक है, मैं आपको एक लैंडिंग पेज एक दिखाना चाहता हूं. वी आर गोइंग टू हैव अ वर्कशॉप. ओके, we are going to have a workshop on our website. एक workshop है, so just wait, let me share the screen with you. Okay, so you can go on this site. मैं इसका link आपके लिए post कर देता हूं. Okay, let me post this link in the description, don't worry. So this is a AI advanced Excel workshop that we are going to organize, and ये हम organize करने वाले हैं on 22. We are going to organize this on 22. So you will be knowing how to build interactive dashboard, automative Excel, repetitive tasks जो मैंने अभी आपको एक बताया, perform smart data analysis and visualization, no prior Excel required. Okay, these are your mentors. Okay, then like why join this course? You will be having all the information, and just after this I will tell you how you can get the certificate. लिंक है, मैं लिंक से आपको अभी करके बताऊंगा कि कैसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हो. डोंट वरी, जस्ट बी इन दिस session for a while long. Okay, you can make these kind of dashboards. These are some advanced dashboards आप ये create कर सकते हो. This is one of the customer success dashboard.
This is a McDonald's sales dashboard. This is a call centers churn analysis dashboard. Now there here it is. There are two dashboards also जो बहुत अलग हैं. एक आपका ये global grocery sales का है. ऑफर इज टुडे और फॉर अ फ्यू मिनट्स. डोंट वरी, द ऑफर इज देयर. आपके पास अभी ऑफर रहेगा, बट आप रजिस्टर इसमें कर सकते हो. नो कोडिंग रिक्वायर्ड. रजिस्टर परफॉर्म बिफोर लाइक 17 जून, मतलब आपको आज ही करना पड़ेगा बिफोर मिडनाइट. And why should attend? If you are HR, admin, analysis, engineering team lead, finance, sales, marketing professionals. Also, you will be getting these kind of worth of bonuses free. You will be getting 30 plus MS Excel automation templates. Like कुछ ऐसे templates जिनमें लोन कैलकुलेशन और बहुत सी चीजें आपके पास रहेंगे. List of 300 premium AI tools. You can get the list of a tool that you can use inside Excel so that you can do data analysis. 100 plus stunning PowerPoint presentation, so you can give a summary of that also, and a complete MS Excel shortcut guide, cheat sheet. This will be the whole workshops schedule, basic setup, then advanced formula and shortcut, data cleaning, visualization, AI Excel tools, then automation and VBA, then real world data, capstone projects. And see, What I told you, average salary if you know advanced Excel, मतलब एक पूरा डेटा एनालिस्ट अगर आपको आता है तो आपका वो सैलरी रहता है उस डोमेन के अंदर, और ये कुछ इस तरीके का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा. तो मैंने लिंक आपको भेज दिया है, लिंक से आप ये अप्लाई कर सकते हो. नाउ एज फॉर द सेशन सर्टिफिकेट गाइस, सो लिंक आपके पास है, ठीक है. लिंक आपके पास ऑलरेडी है, आपके चैट बॉक्स में टॉप पर पिन किया हुआ है. लेट मी शो यू दैट. वेट अ मिनट. Okay, you can see this link. Click on this link, open this link. ठीक है, ये हमने ओपन किया. इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट. यस संकेत, क्विज लिंक इज एरर बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू, क्योंकि अगर आपने इससे पहले सिलेक्टेड पे कभी भी रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आपको अपना अकाउंट वहां बनाना होगा. आप गूगल से जैसे ही उस पर लॉग इन करते हैं, गूगल से लॉगिंग इन करने के बाद आपको वेबसाइट डायरेक्ट इस क्विज के पेज पर ले आएगा. आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट द क्विज. ओके, ओके स्टार्ट. नाउ यू हैव टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. आपको ये क्वेश्चंस वगैरह आंसर करने हैं. आई विल बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस ऑन अ रैंडम बेसिस. ठीक है, आप ये सिंपली, मैं इनको एक रैंडम बेसिस पे मैं इनको सॉल्व कर देता हूं बिकॉज आई हैव द एडमिन्स एक्सेस, सो इट डजंट मैटर व्हाट आंसर आई गिव, आई विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट. यू हैव टू आंसर देम करेक्टली, सो प्लीज मेक श्योर कि आप चीजों को करेक्ट आंसर करें. यस, इंपोर्टिंग कैसे करना है आचमन, वो भी मैं बताता हूं. एक बार हम पहले ये देख लें. इट विल जनरेट इन सम टाइम. जस्ट वेट अदिति, जस्ट वेट. यस रक्षु, जस्ट वेट अ मिनट. Okay, I'll be just attending these answers. What I was saying, Rakshu, that I have admin's access, so it doesn't matter what kind of answer I give, I will get the certificate. Result generate उसी टाइम हो जाते हैं दीदी, डोंट वरी. Okay, save and next, and then now I will submit. Okay, I submitted those. Now, see, here it is written, your attempt was successfully submitted. Please check after some time. If you look at the screen, see here, click on certificate, and as soon as you click this, click here, and your certification is downloaded. Click OK, and here it is. So all the people who are saying that we don't provide certificate, you must wait until the end. So this is a answer to all the people who were saying that we don't provide certificate. You should look for yourself. Okay,
It's just that you have to complete the prerequisites in order to get the project. आप एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद ही अगले क्लास में आते हो, आपको ऐसे ही कोई अगले क्लास में नहीं बिठा देता. Rakshu, complete the quiz. Yes, Deepak, I have saw the message. Don't worry, the data set will be provided. See, after completing the quiz, you have to click on this certificate button. Yes, Deepak, the certificate will be provided. Don't worry. आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. Don't worry, don't worry. Sorry, आपको डेटा सेट भी मिलेगा. Don't worry. Yes, the 6 days Excel course link आपका वो भी शेयर हो गया है. That is also shared on your chat box. So please register before midnight if you want to get it for 99 only. Don't worry. आपको इसमें काफी सारी चीजें मिलेंगी. प्री रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेंगे एंड 22 से आपका वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा. नॉट ओपनिंग. ये 6 डेज एक्सेल का ये 6 डेज एक्सेल वाला है. ठीक है. क्विज का लिंक भी एक और बार सेंड हो जाएगा. प्लीज सेंड अनदर लिंक फॉर क्विज लिंक एक और बार सेंड करना है. आप सभी लोग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे बीटेक स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्कशॉप. यस श्योर श्वेता, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay guys, so I want to know in the chat box how useful and informative you find this session. कैसा लगा आपको सेशन सभी को? आप सभी को सेशन वेलकम क्वांटम टेक्नोलॉजी, वेलकम. सी, जैसा मैंने अभी आपको एक रीजन बताया कि आप ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में नहीं आ जाते. For those who are saying that we don't provide certificate, you just don't have the enough patience to stay until the end. है ना. वो आपने एक मीम देखा होगा कि वो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो बिल्कुल एंड तक खड़ा रहेगा. सो इफ यू आर स्टेइंग अंटिल द एंड, आपको भी जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, एवरीथिंग. So I just showed you how you can get the certificate. Quiz link is also in the chat box. You can go over there, create your or register by your Google account, and then you can. ये रहा, just शिवानी, just above the chat, see quiz link. ये बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पर. It is given there. ठीक है, मैंने ये पिन भी कर दिया on the top. क्विज लिंक मैंने पिन कर दिया. So now I want to know how useful you find this session, everyone. कैसा लगा आपको सेशन? Okay, if you are on the broadcast group, so I will be sending you the data set. It was full of knowledge, insightful. You answered each and every query. Voice is soulful. Baki tareef. Thank you so much, Krishna. Thank you so much. Thank you so much, Saurabh. How to get today attend the session certificate. हरी सेशन आप YouTube पे देख सकते हो और लिंक आपके पास है ऑलरेडी क्विज का, तो आप वहां से अटेंड कर सकते हो. No link of quiz. If you check the pinned messages in the chat box, Siddhi, there is link of the quiz. Check the pinned messages and just below your message there is another quiz link. कृषिका, आपने क्विज पूरा अटेम्प्ट कर लिया. अभी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में देखो, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, तो एक सर्टिफिकेट करके ना एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा. कृषिका, आपको उस पर क्लिक करना है.
और आपको सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। ओह, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Yes, Shayan, you done with quiz. Now on the bottom left section of your screen, you will find a option which says certificate on the bottom left. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूं एवरीवन। देखिए, ये दिख रहा है आपको बॉटम लेफ्ट पे, यहां पर इसे क्लिक करना है। गीता फर्स्ट रजिस्टर ऑन द सिलेक्टेड वेबसाइट, देन आप डायरेक्ट क्विज लिंक पे लैंड कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट करके सर्टिफिकेट दे सकते हो। सिद्धि स्टार्ट टेस्ट करके एक लिंक आ रहा होगा, स्टार्ट द टेस्ट करके एक लिंक आ रहा होगा। स्टार्ट द टेस्ट करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, मैंने प्रॉपर शो करके बताया था आपको कि कैसे अप्लाई करना है उसे। सी, शाइन्स ऑल्सो ऑल डाउनलोडेड ऑलरेडी। कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? हाउ टू मर्ज एंड रिमूव कॉलम्स। बहुत सिंपल ऑप्शन होता है आपके पास, मैं आपको यहीं से बता देता हूं। दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई विल बी टेलिंग यू, बिकॉज आफ्टर दिस वी विल बी क्लोजिंग दिस सेशन, सो डोंट वरी वेदिका, योर डाउट विल बी क्लियर्ड। अब आपको जिन भी कॉलम्स को मर्ज करना है, मैं इनको बंद कर देता हूं एक बार सो दैट यू कैन व्यू द डेटा क्लियरली। आपको जिन भी कॉलम्स को मर्ज करना है, जितने भी आपको मर्ज करना है कॉलम्स को, पहले उनको सिलेक्ट कर लो। स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स, जैसे मुझे ये दो कॉलम्स मर्ज करने हैं, राइट क्लिक, मर्ज कॉलम्स। नाउ इफ यू वांट टू मर्ज द कॉलम्स, आपको सेपरेटर देना पड़ेगा। लेट्स से आई विल गिव अ कस्टम सेपरेटर, आई वांट टू सेपरेट देम बाय अ डैश एंड क्लिक ऑन ओके। अरे, इज माय स्क्रीन नॉट विजिबल? यस, आई जस्ट गॉट टू नो। ठीक है, ये मर्ज कॉलम्स वाला हटा देता हूं। चलो मैं फिर से बता देता हूं। अब जैसे मुझे ये दो कॉलम मर्ज करना है, मैंने लिया स्टूडेंट आईडी और मैंने लिया कोर्स। विच डाउट आचमन, आपने पूछा था कि आपको डेटा एनालिसिस एंड क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन आप रॉ नॉर्मल डेटा से कैसे बिगिन कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि आप उसमें बेसिक चेंजेस कर सकते हो, आप कॉलम्स मर्ज कर सकते हो, आप कॉलम्स रिमूव कर सकते हो। बेसिक चेंजेस के लिए आपको पहले ईडीए आना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो आपको एनालिसिस एक थोड़ा बहुत तो आना पड़ेगा कि मतलब डेटा एक्चुअली क्या है, किस टाइप का है, किस वजह से है, वाई, मतलब डेटा में क्या क्या आपके पास कॉलम्स हैं, तो उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करोगे ना। अब नॉर्मल डेटा में तो आप सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स सी, आई हैव टू कॉलम्स, दोनों को कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ओके, एंड मर्ज कॉलम्स। नाउ यू हैव टू गिव द सेपरेटर के इन दो कॉलम्स को आप ज्वाइन तो कर रहे हो, लेकिन इन दोनों को आप मर्ज कैसे करना चाहोगे, तो मैं एक कस्टम सेपरेटर दूंगा। कस्टम सेपरेटर में मैं यहां पे देता हूं ये डैश, इंपोर्टिंग डेटा, ओके 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 ओके, क्लिक ऑन ओके, and you can see that merged column has there Haley A leadership, Harvey R analytics, ये दो कॉलम्स आपके मर्ज हो गए। ओके वेदिका, अब अगर आपको कॉलम्स को करना है रिमूव, तो बहुत सिंपल है, वो तो जो कॉलम रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करो और यहां पर आ जाओ, रिमूव कॉलम्स, खत्म काम। कोई भी स्टेप हटाना है, instead of using DAX we are using shortcuts. See, DAX is different, Sahaya. We use DAX queries in Power BI only. We don't use DAX queries inside Excel. Okay, importing data.
डेटा इंपोर्ट करना बता देता हूं. Last thing of the session, go on data, go on get data. Now choose your source, whether you want to get a data from Excel workbook, text, CSV, XML, JSON, PDF folder. If it's a database, if it's from SQL, Microsoft Access Analysis Service, or from any other sources, I chose the from Excel workbook. And from Excel workbook, now you only have to select the destination where you have your file, select that and open that. That is how we import data. ये हो गया import. Yes, if it's one answer is wrong, don't worry, you will get the certificate. ये आ गए हम टेबल पे, ये टेबल लिया, ये ट्रांसफॉर्म पे गए और ये आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा पावर क्वेरी. ओके. So I think guys, I was able to cover all of your doubts and was able to cover your confusion or solve your confusion on the certificate part as well. Now it's already time. I think we are going to end this session now. So please be with us for like these kind of information and these kind of useful things. We are going to organize one more webinar, one more bootcamp at 22, and the topic for that bootcamp will be data modeling inside Excel. We'll be creating semantic modeling. We'll be learning about Snowflake data models. We'll be learning about Snowflake modeling and star schema modeling. Snowflake schema and star schema. इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसमें. So please join the 22. Join that on 22. And from 24, the 6 days AI workshop will also start. So for these kind of knowledgeable sessions and information, be with Skillected, follow Skillected on Instagram and YouTube, and you can cover everything in data analytics. So, okay guys, good night, good evening. Thank you so much. Let's end the stream now.